So, hello everyone. I, Kuldeep Sharma, welcome you all to today's session of daily news analysis, along with which we are also going to do the 20 GK questions from the today's newspapers. Again, the same reminder from last class also that it is advisable that you try to do the 20 GK questions from the portal, at least the CLAT PREP students, because these are uploaded on the portal, and then look at the answers from today's analysis. Otherwise, this exercise would become futile. Okay, so let's start with the today's analysis. So the first important news which we have to do today is the first news from the Hindu newspaper, which is talking about that there has been a increase in the direct tax collection. So also it is not like I'm not listening to your feedbacks. So in the last class, one of the students said कि I should also converse in Hindi also. तो ठीक है बाइलिंगुअल रखेंगे आपसे क्लास को ठीक है तो बीच बीच में मैं एक्सप्लेनेशन आपको हिंदी में और मिक्स में दूंगा मेजरली जो टेक्निकल टर्म्स होंगी टर्मिनोलॉजीज होंगी विच इट वुड बी इन इंग्लिश ओनली ओके so let's look at the first news headline. So first news headline is regarding that there has been an increase in the collection of direct taxes of the government. What is the net here? Net is basically अगर डायरेक्ट टैक्स को कलेक्ट करने में मेरे कुछ एक्सपेंसेस हुए हैं या मैंने कुछ लॉस करा है उसको मैं सब्ट्रैक्ट कर दूं तो आई विल गेट द नेट कलेक्शन. ओके, so that is the direct tax collection. So जो नेट कलेक्शन हुआ है whatever the government had target, जो 2024 का गवर्नमेंट का टारगेट था, it has exceeded that target. Okay, so again I have so people of CLAT PREP student जिनकी आपकी न्यूज़पेपर क्लासेस एक्सेट्रा हुई हैं, you should know कि जो फिगर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल 17.7% से ग्रो हुआ, the target is right now 19.56 lakh crore etc. These are not important for you. These are not important. Data points of these types are not important. What is important is being taught in the class also. And whenever exam would come near to us, then we are going to tell you the specific data points which are important for you. Okay, but you should understand what is direct tax, what is indirect tax, what are the types of direct taxes, what are the types of indirect tax. So, for example, we are here talking about direct tax. So, taxes are basically can be divided into two types. One would be direct tax, one would be indirect tax. So, the direct tax is the tax where it is levied on the person, on a person, or an entity like a company also. Person भी हो सकता है, entity भी हो सकता है, and he pays directly. He pays directly to the government. So ये जो paying directly, that is the direct tax. And examples of direct tax would be a tax on income. Income tax is put up on the income earned by a person, or for example, wealth tax. So India, so mention in the chat box, does India impose wealth tax? क्या इंडिया के अंदर वेल्थ टैक्स लगता है क्या? इसको आप वेल्थ टैक्स को अपन और भी नामों से जानते हैं. इसके अलावा और वेल्थ टैक्स के अलावा हो जाएगा आपका कॉर्पोरेट टैक्स. तो कॉर्पोरेट प्रॉफिट बनाती हैं वो भी एक आपका डायरेक्ट टैक्स ही होता है इनकम टैक्स की तरह. पर्सनल इनकम टैक्स हो जाता है ये कॉर्पोरेट टैक्स हो जाता है आपका. इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ डायरेक्ट टैक्स ओनली, विच मीन्स कि जिस पर्सन पे जिस एंटिटी पे ये लगाया जा रहा है वो ही डायरेक्टली पे कर रही है गवर्नमेंट. ऑन द अदर हैंड द अदर टाइप ऑफ टैक्स इज द इनडायरेक्ट टैक्स. And what is special about indirect tax? That it is paid indirectly. So usually it is levied on the goods and services. And you are the ultimate consumer. Let's say if you have bought something, you are actually the payer of that tax. Paid तो आप ही कर रहे हो, but collect करके government को deposit, collection and deposit is by some other person या intermediary या producer. So I'll give you an example also. And I'll give you an example of the most famous or most popular biscuits, Parle G biscuits. So when you buy a Parle G biscuit of rupees 10 or 5, let's say आपने 10 रुपए का Parle G biscuit रखा, so you know the MRP, that is the maximum retail price, जो maximum price हो सकती है उसकी, which means MRP is the maximum price. It can be sold at a lower price also. ठीक है, बट इससे ऊपर नहीं सोल्ड कर सकते. दैट्स अ मैक्सिमम रिटेल प्राइस. अगर जो उसकी एमआरपी 10 रुपीज है, जो पार्ले जी की जो कंपनी है उसकी ओनर कंपनी उसने जो डिसाइड करी है, इसके अंदर उसने टैक्स कंपोनेंट्स भी इंक्लूड कर लिए. फॉर एग्जांपल पार्ले जी, बिकॉज इन
पे एक कोई गुड्स एंड सर्विस पे टैक्स लगता है तो कोई इनडायरेक्ट टैक्स लगेगा। एंड राइट नो इफ यू नो कि इट इज द जीएसटी, इट इज द जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, विच इज इम्पोज ऑन गुड्स एंड सर्विस, राइट। सो जो भी टैक्स बनता है 2.5%, 1%, 5%, 8%, नॉट, सॉरी, इट वुड बी 0, 5, 12, 18, 28, 5 टाइप की जीएसटी रेट्स। लेट्स से इस पे 5% टैक्स लगता है, तो जो 5% का टैक्स है इट इज मेड पार्ट ऑफ दिस एमआरपी। तो जो आपकी जीएसटी विच इज अ टाइप ऑफ अ इनडायरेक्ट टैक्स, व्हेन इट इज कलेक्टेड, so it is the producer of Parle G biscuit who is going to pay it to the government. But who is the final payer of that tax? It is you, who is the consumer. Because जो टैक्स कंपोनेंट है उसको प्रोड्यूसर ने पहले ही इस एमआरपी में ऐड कर। ओके, आई होप यू गॉट दिस पॉइंट कि व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट इज इनडायरेक्ट टैक्स। तो अभी एज ऑफ नाउ डायरेक्ट टैक्स का कलेक्शन है, इट हैज एक्सीडेड वट एवर द टारगेट वॉज सेटअप बाय द गवर्नमेंट। एंड एट द सेम टाइम कुछ टाइम पहले इट वॉज रिपोर्टेड कि इनडायरेक्ट टैक्स का जो टारगेट है वो भी गवर्नमेंट ने हैप्पीली अचीव कर लिया है। एंड अगेन आई रिपीट, जो डेटा पॉइंट्स आपके यहाँ मेंशन है दोज आर नॉट इंपॉर्टेंट फॉर यू, डू नॉट हैव टू लर्न दोज पॉइंट्स। ठीक, मूव करते हैं, नेक्स्ट न्यूज पे आते हैं। तो यूजली स्टेट पेजेस के ऊपर इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स नहीं आते हैं। स्टिल एक अभी इसमें एक रिपोर्टेज आया है रिगार्डिंग एवियन इन्फ्लुएंजा, जिसको अपन बर्ड फ्लू भी बोलते हैं। एवियन इन्फ्लुएंजा या एवियन फ्लू भी बोलते हैं, इन्फ्लुएंजा का शॉर्ट फॉर्म फ्लू भी होता है एवियन फ्लू, या आप इसको बर्ड फ्लू भी बोलते हैं। तो रिसेंटली केरला के अंदर देयर हैव बीन मल्टीपल केसेस ऑफ बर्ड डेथ्स। एंड जब भी बर्ड डेथ्स होती हैं इट बिकम्स अलार्मिंग एंड द गवर्नमेंट इज फोर्स टू किल दोज बर्ड्स। गवर्नमेंट को उन बर्ड्स को मारना पड़ता है, एंड नॉट जस्ट बर्ड्स हु आर डायरेक्टली इन्फेक्टेड, बट गवर्नमेंट को क्वारंटीन क्रिएट करना पड़ता है। क्वारंटीन मतलब एक एरिया क्रिएट करना पड़ता है, लेट से 1 किलोमीटर रेडियस का एरिया उन्होंने किया, और लेट से अगर इस एरिया में फैला है तो इसके इतने एरियाज में जितने भी बर्ड्स होंगे which might have gotten infected by this bird flu, all of those are to be killed. Why? Why it has to be done? Because bird flu is a very high infectious or contagious disease. So it spreads very fast. It spreads very fast. So if immediate steps are not taken in such a case, then it can actually affect all of the bird population in an area. And another important point is that it just not impacts your wild birds. It also impacts the birds in the poultry also, and vice versa. So which means all kind of birds get impacted or gets affected by the bird deaths. And another important point is the mortality rate of a bird impacted by affected by avian influenza is very high. Mortality rate is very high. So as of now, there is no cure also for avian influenza among birds. So, one thing which I forgot is the variant, like we had COVID-19 Omicron variant. Similarly, the type of influenza virus or bird flu which is being run in the Kerala state is known as the H5N1 subtype of the virus. So you should know the type also. Okay, mortality rate is very high, and एक क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बन जाता है वो, does human gets impacted or gets affected by this disease? The answer is yes. Humans also get this disease. Humans can also contract this virus from birds by getting into contact with those birds. Human can also contract this virus. तो यूजुअली ह्यूमंस को इम्पैक्ट नहीं करता है, ह्यूमंस को ये वायरस से कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। बट अगर ह्यूमंस में ये रीच करता है देन मॉर्टेलिटी रेट इन ह्यूमंस आल्सो बिकम्स, यूजुअली नहीं करता है बट यूजुअली अगर कुछ पर्सन का इम्यून सिस्टम वीक है तो बर्ड फ्लू से उनको भी इफेक्ट आ सकता है, बिकॉज ऑफ दिस द मॉर्टेलिटी रेट और द डेथ रेट बिकम्स वेरी हाई। एंड इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड इज कि बर्ड्स को मारना क्यों जरूरी होता है, बिकॉज अगर आप इस बर्ड वायरस को कंट्रोल नहीं करोगे और स्प्रेड करने दोगे तो ये म्यूटेट करेगा, इवॉल्व करेगा, इट विल म्यूटेट एंड इवॉल्व, and then it can transfer very easily into humans. And right now, again, as I said earlier also, there is no cure for this virus.
So अगर एक बार impact हो गया, the probability of death of a person becomes very high. ठीक है, that's why it becomes very important that we control it at the initial stage only. Okay, so that's it from this information. इतना ही आपके लिए important. Moving on. So another report is regarding, so ऑस्ट्रेलिया का ने नया अपना डिफेंस स्ट्रेटेजी लॉन्च करा है अपने लेवल पे, और उसको उसका नाम क्या है, न्यू नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी 2024, नेशनल डिफेंस स्ट्रेटेजी 2024. And important thing in Australia's strategy is that in that strategy it is specified India as a top tier security partner. That which means कि जो इनके allies की list है, allies nation की या friendly nation की list है, उसमें India is on the top. So not just India, India, US, etc. are on the top. तो इस न्यूज में ज्यादा इंपॉर्टेंट ये इसका कंटेक्स्ट, why it is important for India and US. So if you know, there is a multinational grouping known as Quad. Quad means four, quadrilateral. So it is a grouping, a military security alliance of four countries. It has India, it has US, it has Japan, and it has Australia. So earlier it was kind of a economic grouping only, but later on they what was the true intention of such a grouping was to create a counter to China, and that's why now it has been converted into a military strategic alliance between these four countries. और इसके अंदर जो चार कंट्रीज हैं इनको आप चीन पीड़ित चीन पीड़ित समाज, ये सब चीन के सताए हुए लोग हैं, चीन पीड़ित समाज भी बोल सकते हो आप इनको. इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, एंड all the countries are facing one or the other difficulty in dealing with China. Okay, so इन सब ने military strategic alliance बनाया. इसके अलावा apart from this alliance there is another alliance known as AUKUS. ऑस्ट्रेलिया, यूके एंड यूएस, ये भी एक मिलिट्री स्ट्रेटेजिक अलायंस है, एंड इसके अंदर इन्होंने जो फर्स्ट इन्होंने जो व्हाट शुड आई से पैक्ट साइन किया है, दैट इज फॉर सप्लाई ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन, सप्लाई ऑफ न्यूक्लियर सबमरीन to Australia. So UK is going to build a nuclear submarine for Australia. As of now, Australia does not have any kind of nuclear weapon or nuclear submarine, but because there is a looming threat of China in the South China Sea and around the Australian Sea also, that's why, so that Australia can become a full military partner of these countries, UK and US have decided to provide Australia with a nuclear submarine or a technology to develop a nuclear submarine. Okay, apart from this, another important term here is what is the type of partnership between India and Australia. So it is a comprehensive strategic partnership. It is a comprehensive strategic partnership between India and Australia. Okay, what does this mean? That comprehensive means ki wholesome. So not just in one or two sector, or not just in terms of army or navy, it would be in all terms. For example, let's say in future we are going to getting involved in cyber security also. So automatically these would be like strategic partner. Whatever policy India prepares or whatever new technology India gets to protect its assets from foreign intervention, it would be giving it to Australia also, and the same would be the case for Australia also. So that is the example of a comprehensive strategic partnership कि इनके जो डिफेंस गोल्स हैं, दोनों कंट्रीज को डिफेंस गोल्स हैं, वो म्यूचुअल हो जाएंगे. फॉर एग्जाम्पल, अगर इंडिया इज फेसिंग थ्रेट्स फ्रॉम चाइना, then Australia is going to be on the side of India. And the same is the case with Australia also. Australia को अगर कोई country परेशान कर रही है, तो India would come in support of Australia. So that is the meaning of a comprehensive strategic partnership. Apart from this, one thing from Quad, which I forgot to tell you, that so you should tell me the name in the comment box. What is the exercise? What is the naval exercise? The annual exercise होती है. What is the name of the naval exercise in which all Quad nation participate? So abhi last year, first time all four Quad nations actually participated in this naval exercise, which is being hosted by India. Okay, so you have to tell me the name of the naval exercise, which is the Quad naval exercise now. Okay, so moving on to the next news now. So from the science section, so again,
Remember, science and tech also forms important part of your preparation. So to get an idea, if you look at the previous year question paper, there was a question on Chandrayaan 3. And to previous year, it was regarding a Turing machine. Turing machine was the initial machine on which the computers are based. So S&T forms important portion, and if you will go through the previous year question papers of 2020, 21, and before that also, there have been always, maybe there might be an exception of 1 or 2 years, there has always been one passage related to science and tech, which means 5 to 6 question comes up from the science and tech sector also. So today's in now Hindu Daily is providing you with a science topic, and today's topic is regarding mpox. So what you should understand is that in the science and tech related topics, the technicalities are not asked or the concepts are not asked. Even whatever the details are there, that is not asked. But if something has come up in news, some topic, for example, this mpox virus has come up in news, then you should know the basics of this. For example, you should understand what mpox is, what a pox virus is, how pox virus is going to impact humans, what are the kind of, is there a vaccine for this mpox virus? Is there a cure for mpox virus? Which are the reasons from which it originated? So the basic general knowledge question can be asked from it. Okay, not the details one. However, if there was a pandemic like situation, like there was COVID-19, then it is expected that certain technical question can also be asked. So you do not have to ignore the science and tech portion, the science section in the Hindu newspaper, but at the same time, you do not have to go into the details of those news items. Okay, so let's look at the mpox. So earlier this mpox was known as monkeypox. However, it was felt that it is very wrong to say to name a virus with the name of a animal. Why? Because let's say अगर mpox किसी country में फैलता है and mpox की जगह उसका नाम monkeypox होता, तो let's say फिर लोगों में क्या डर बैठ जाता है, तो वो क्या करते हैं, if they saw monkey anywhere, they will probably kill that monkey, or they will ask the government to kill all the population of those monkeys. तो इस टाइप से क्या होता है कि बहुत सारे जो एनिमल्स ब्रीड्स होती हैं, स्पीशीज होती हैं, वो थ्रेटन भी हो सकती हैं उनका, ठीक है. सो बिकॉज ऑफ दिस इट वाज डिसाइडेड बाय डब्ल्यूएचओ. सो इट इज द डब्ल्यूएचओ, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जो नेमिंग करता है वायरसेस. So that's why mpox virus. Similarly, if you remember, जो COVID-19 virus था, again a question I'll ask you. What was the original name of COVID-19 virus? Yeah, what was the on which city name did the COVID-19 original name was derived? ठीक है, या तो आप कमेंट बॉक्स में अभी मेंशन कर दीजिए. वेन एवर यू फाइंड आउट, यू कैन एक्चुअली डू अ गूगल सर्च ऑल्सो इफ यू डू नॉट नो इट, एंड जस्ट आंसर इट. ओके, कि कोविड-19 वायरस को किस सिटी से आप रिलेट कर सकते हैं. यू विल फाइंड द नेम ऑफ द सिटी ऑल्सो. इट्स अ 5 सिटी टाउन. ठीक है, इट वाज नोन एज डैश वायरस. 1 2 3 4 5, इट्स अ 5 letter word. Okay, so you have to tell me that. So moving on. So for example, you should know that the mpox was earlier known as monkeypox. Its first case was founded in the Democratic Republic of Congo, and because it was known as monkeypox. Why? Because it is the primary reservoir. Basically, virus कहाँ exist करता है, किस reservoir में exist करता है. So it is basically found in monkeys. That's why एक तो monkeys हो गया, या फिर all the types of primates. So I hope you know that humans are also primates. So all of our ancestors, yeah, our brothers and sisters in terms of evolution. For example, your chimpanzees, etc., gorillas, etc. All of these can get impacted, yeah, can get affected by the monkeypox virus. And apart from it, rodents also, because our DNA is very similar to rodents. जो आपके mice रहते हैं, उनसे भी आपका DNA होता है. Okay, so it was there also. Also remember, usually it is the animal kingdom which gets impacted, but it does not mean that humans cannot get affected by this. So just like COVID-19, just like your avian influenza, mpox can also be contracted by a human also. So remember this, humans can also contract this virus. And just like avian influenza, यूजुअली ह्यूमंस डॉट गेट इम्पैक्टेड, बट अगर उनको अफेक्ट हुआ है, उनको कॉन्ट्रैक्ट हुआ है ये वायरस, देन दैट रेट mortality rate is also very high. Mortality rate is also very high,
and as of now there is no vaccine or cure for it. तो ओके, ऐसा नहीं है कि 100% श्योरिटी है डेथ की, तो बट जो क्योर है वो, इसका स्पेसिफिक कोई क्योर नहीं है, बट देयर इज अ सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट। जैसे आपको बुखार आता है तो आप पैरासिटामोल लेते हो यूजुअली, ओके, डॉक्टर आपको कोई पर्टिकुलर मेडिकल कोर्स देगा डिपेंडिंग ऑन किस टाइप के सिम्टम्स हैं। तो आपको जिस टाइप का हेडेक हो रहा है या कुछ और हो रहा है तो उस हिसाब से सिम्टम्स को ट्रीट किया जाता है। बट मंकी पॉक्स को कैसे ट्रीट करना, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं है एज ऑफ नाउ। ओके, सो अभी ये न्यूज में क्या है, सो यूजुअली जो इसकी जेनेटिक स्टडी हुई है, जो इसकी जेनेटिक स्टडी हुई है इसकी वायरस की, उसमें दे फाउंड कि इसका इवोल्यूशन बहुत फास्ट हो रहा है, इट इज इवॉल्विंग वेरी फास्ट। और कैसे इवॉल्व हो रहा है उसके अंदर ये एक टर्म दिए हुए जेनोमिक अकॉर्डियन, जिसको ये यूज करके इवॉल्व कर रहा है, जिससे ये ह्यूमंस को भी अब इन्फेक्ट करना स्टार्ट कर चुका है। अगेन यहां से अब टेक्निकल पार्ट स्टार्ट हो जाए, विच मीन्स ये सब पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं। तो इट इज एडवाइजेबल कि आप इस टाइप के आर्टिकल्स को प्लीज रीड करें। Remember this, it is very important that you read such kind of articles because they are very important for your English and your logical reasoning, critical reasoning, not logical but critical reasoning specifically. Okay, uske liye it forms an important part. So that's why it is advisable that you go through these articles. Okay, moving on. So again, science में ही है, antihistamine, a pill for your sleep. So antihistamine are a type of are drug types, or a type of drugs which are used for treating allergies या allergy symptoms. तो अगेन इट इज एडवाइजेबल, साइंस सेक्शन में व्हाट इज इट करके कोई ना कोई एक्सप्लेन किया जाता है। सो एंटी हिस्टामाइन इज अ टाइप ऑफ ड्रग टाइप, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग्स होते हैं जो एलर्जी सिम्टम्स को ट्रीट करते हैं। तो उसके बारे में थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन है। अगेन आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग यू कि आप इन सबको रीड करें, बट अगेन इट वोंट कॉज एनी हार्म अगर आप एक रीडिंग कर लेंगे तो। ठीक है, आपको समझ में भी नहीं आ रहा कोई बात नहीं, बट जस्ट नोइंग कि व्हाट आर एंटी हिस्टामाइन। तो हिस्टामाइन आपका एक रिसेप्टर होता है बेसिकली, जहां से आपका ट्रिगर ट्रिगर पॉइंट होता है, जहां से आपकी एलर्जी स्टार्ट होती है। तो इट ब्लॉक्स दैट रिसेप्टर। तो हिस्टामाइन रिसेप्टर होता है, उसको ये ब्लॉक कर देता है, बिकॉज ऑफ दिस एलर्जी रिएक्शन जो होती है वो वहीं पर ही स्टॉप हो जाती है। दैट्स व्हाई द नेम एंटी हिस्टामाइन। तो इस टाइप से कोई भी आपको इंफॉर्मेशन मिले तो यू शुड रीड इट, दैट इज द ओनली एडवाइस आई वांट टू गिव। मूविंग ऑन, so next is the editorial section of the Hindu. So apart from general knowledge section, the editorial section is again the most important part for your CLAT preparation in general. CLAT preparation के लिए again CLAT prep नाम नहीं आ गया, CLAT preparation के लिए editorial forms a very important part because they gives you with the strong arguments, they provide you with strong arguments regarding a particular topic. तो ऑल्दो यू कैन एक्चुअली क्लेम कि हिंदू इज अ बायस न्यूज़पेपर, आपको लग रहा है कि बायस है, बट स्टिल एटलीस्ट आपको वन साइड के बहुत स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स मिलेंगे। एंड यूजुअली जो लेफ्ट साइड में आर्टिकल होता है, दीज आर नोन एज द एडिटोरियल। तो रिमेंबर, जब एडिटोरियल जो होते हैं, इट इज नॉट दी ओपिनियन ऑफ अ सिंगल पर्सन और अ सिंगल एडिटर, इट इज एक्चुअली द ओपिनियन और द व्यूज ऑफ द एडिटोरियल बोर्ड ऑफ अ न्यूज़पेपर। एक पर्सन नहीं, चार पांच एक्सपर्ट्स लोग पर्टिकुलर जो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है रिगार्डिंग अ पर्टिकुलर टॉपिक, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। So you might or might not found anything important for GK. For example, you might find something important for GK, but I'm very sure that you are going to find a lot of good information for your English and for your logical reasoning part. And by God grace, if a legal reasoning portion comes up, a legal reasoning article is covered, then you are also going to get preparation, yeah, help for your legal reasoning portion also. So let's try to understand what this editorial is talking about. So sovereign assessment, the richer nation must show more support for the poorest country. तो अभी व्हाट हैपेंड इज कि आईएमएफ जो है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इनकी एक रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट के अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, नॉट वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, आईएमएफ की रिपोर्ट आई है। उसके अंदर दे प्रोजेक्टेड की जो वर्ल्ड वाइड ग्रोथ है, जैसे अपन जीडीपी कंट्री की कैलकुलेट करते हैं, अगर हम पूरे वर्ल्ड की ग्रोथ को देखें तो एक्चुअल में जो प्रेडिक्शन है फॉर द नेक्स्ट ईयर, फॉर दिस ईयर 2024, इट हैज इंक्रीज। तो पहले लग रहा था कि जो कंट्रीज हैं वो 2.9 से ग्रो करेंगी, बट नाउ दे आर सेइंग दैट इंडिया एंड अदर कंट्रीज, द वर्ल्ड टुगेदर इज गोइंग एट द स्पीड ऑफ 3.2%। तो जो ग्रोथ रेट है इट वुड बी 3.2%, and it is a good news. However, at the same time, what the assessment is that
although the growth has increased, but this growth is going to be in the developed countries majorly. And to some extent, the developing countries are also going to grow. However, the sobering part of this news is that the least developed countries or the underdeveloped countries, undeveloped countries are actually going to see a downfall, are going to see a downfall in the growth. So there would be a downfall in the economic growth of the least developed countries, which means the developed countries are going to become richer in the future. The countries are also going to get better in their economic scenario. However, LDCs or underdeveloped countries are going to see a downfall in their economic growth, which is going to actually increase income and income and growth inequality. So inequality here between countries is going to increase. And why this is problematic is जो least developed countries and they are already very poor. They do not have education and health facilities. Recently, because of COVID-19, they had they had suffered a huge amount of losses, economic losses, etc. were suffered by these countries. तो पहले उनसे ही रिकवरी नहीं हो रही थी एंड एट द सेम टाइम उनके पास अब वो जो ग्रोथ भी हो रही है उसका भी कोई बेनिफिट नहीं हो रहा है, विच इज लाइक अ सोबरिंग असेसमेंट. और जब आप सब एंडिंग पढ़ोगे यहाँ पर भी यू कैन सी द रिचर नेशन मस्ट शो मोर सपोर्ट फॉर द पुअरेस्ट कंट्री. यानी कि व्हाट इट इज सजेस्टिंग इज, आप यहाँ पे जब पढ़ोगे, इट इज व्हाट इट सजेस्टिंग इज कि जो डेवलप कंट्रीज हैं और उनकी जो इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक द वर्ल्ड बैंक, developed countries and जो institution world banks, they should do more to support the least developed countries. तो least developed countries को और ज्यादा सपोर्ट देना चाहिए और ज्यादा डोनेशंस ग्रांट्स एक्सेट्रा देनी चाहिए. डोनेशंस ग्रांट्स फूड हेल्प डायरेक्ट हेल्प अगर पॉसिबल है तो कंट्रीज को वो देनी चाहिए. एंड अगर आप इसको स्ट्रैटेजिक पर्सपेक्टिव से भी देखो इंडिया के यूएस के एक्सेट्रा, इट बिकम्स इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर इंडिया यूएस यूके वेस्टर्न कंट्रीज आगे नहीं आएंगे, देन कंट्रीज लाइक चाइना एंड रशिया जो वर्ल्ड डोमिनेशन की तरफ अपना अप्रोच रख रहे हैं, दे आर गोइंग टू कम टूवर्ड्स टू दीज एलडीसीज कंट्रीज विद देयर लोन्स एक्सेट्रा. एंड जैसे चाइना बाकी कंट्रीज के साथ कर रहा है कि बिकॉज अगर वो लोन नहीं चुका पा रहे तो उनके एसेट्स को ले रहा है, तो ये चीज उन कंट्रीज के साथ भी हो जाएगी और फिर इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर इंडिया टू फाइट विद चाइना एक्सेप्ट. एंड सेम इज द इज विद यूएसए यूके आल्सो. Okay, so all of this has been suggested in this article. Okay, moving on. So another important article. So today in on the editorial page, there are actually five articles on environment. Again, environment is very important for you because in the most of the cases there would be one passage from the environment section also. ठीक है, यूजुअली alternate years होता है, लास्ट ईयर डायरेक्टली नहीं आया है जीके के अंदर में, तो एक्चुअली दिस ईयर यू कैन एक्सपेक्ट आर्टिकल ऑन एनवायरमेंट. अगेन टॉपिक्स लाइक क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट में आई एक्सपेक्ट कि अगर क्वेश्चन बनता है तो क्लाइमेट चेंज सबसे अच्छा क्वेश्चन बनता है. तो बिकॉज ऑफ दिस क्लाइमेट चेंज पे एनवायरमेंट पे इस साल आपका एक पैसेज आना इज वेरी प्रेडिक्टेबल. उसके अलावा अगेन क्लाइमेट चेंज इज अगेन फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर इंग्लिश एंड क्रिटिकल रीजनिंग. व्हाई? बिकॉज क्लाइमेट चेंज के अंदर बहुत सारे टेक्निकल टर्म्स होते हैं, तो उन टेक्निकल टर्म्स का इंग्लिश के अंदर मीनिंग पूछ लेना या उसका क्रिटिकल रीजनिंग के अंदर अजम्पशंस या इंफरेंस कंक्लूजन पूछ लेना becomes very मतलब probable. तो इस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं. So let's look at this article. So this is an article written by two senior experts from Council of Energy, Environment and Water. So CEEW is an organization. उसके CEO and senior program lead ने मिलके एक आर्टिकल लिखा है, which means experts have written this article. So it would be having very strong arguments regarding this topic. तो अगर आपको कोई भी इस टॉपिक से वाटर स्ट्रेस पे क्लाइमेट रिलीजन से रिलेटेड कुछ अच्छे पॉइंट समझने हो तो इट वुड बी इन दिस आर्टिकल. एंड व्हाई 5 articles have come up on environment? Because today on 22nd of April we are celebrating World Earth Day. And why do we celebrate World Earth Day? Appreciate the efforts to conserve
efforts taken to conserve the environment. So we celebrate the efforts which have been taken to conserve environment. And apart from it, whenever World Earth Day comes up, at least everyone, the countries, etc., are forced to recognize the importance of conserving of environment. ठीक है, तो बार बार एक एनुअल रिमाइंडर आता है लोगों को कि भाई अर्थ इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, सो जस्ट लुक एट व्हाट यू आर डूइंग टू द अर्थ. So that's why this type of news also becomes important. Okay, so इसके अंदर क्या क्या है. सो अगेन फॉर एग्जांपल, ऑल्दो वी हैव डन इट बिफोर आल्सो, कि आईएमडी ने प्रेडिक्ट कर दिया है कि इस बार हीट वेव्स होने वाली हैं. इन एनी केस डब्ल्यूएमओ ने अभी तक 2023, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने 2023 को हॉटेस्ट ईयर ऑन रिकॉर्ड डिक्लेयर कर दिया है. एंड देयर हैव बीन प्रेडिक्शन दैट 2024 is going to break the record of 2023 in terms of the temperature. Okay, so now they are arguing कि ये तो context है ही. इसके अलावा there have been news regarding that Bengaluru, which is the tech capital of India, silicon भी बोलते हैं, silicon city of India भी बोलते हैं. For example, just like your San Francisco of India बोलते हैं बेंगलुरु को, because सारे startups, tech startups are in Bengaluru. Okay, so ये सब भी बोलते हैं. तो बेंगलुरु जैसे सिटी के अंदर there have been water scarcity. Okay, water crisis, not scarcity, but crisis. There is no proper water available there also. तो वहां पे पहले से अब वाटर बजटिंग स्टार्ट हो चुकी है कि फॉर एग्जांपल पर्टिकुलर सोसाइटी में इतने टाइम पीरियड के लिए इतना लीटर वाटर ही मिलेगा. अब नाउ इट इज अप टू यू कि आप कैसे वाटर बजटिंग स्टार्ट करते हो. Okay, so all of this has been set up as the context. Then here the author is talking about the importance of Earth Day. So like I told you कि जो अर्थ डे 2024 है, इट इज शुड बी अ वेकअप कॉल कि अब जागने का टाइम आ चुका है. बिकॉज एज यू कैन सी कि क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट आर रियल. यू कैन एक्चुअली सी कि 2023 ये सब 175 ईयर ऑफ हिस्ट्री में, 180 ईयर्स की हिस्ट्री में हॉटेस्ट ईयर बनते जा रहे हैं. बेंगलुरु जैसे सिटी के अंदर विच इज टेक कैपिटल ऑफ इंडिया, टेक स्टार्टअप कैपिटल ऑफ इंडिया, वहां पे वाटर क्राइसिस हो रहा है. मेजोरिटी ऑफ यूथ इज लिविंग देयर एंड इट डज नॉट हैव इवन वाटर फॉर सर्वाइवल ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स. तो ये सब इश्यू आपके सामने दिख रहे हैं, विच बिकम्स वेरी रेलिवेंट फॉर अस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू टेक इमीडिएट स्टेप. उसके बाद it is giving you certain other facts also. For example, it is talking about the scale of problem in India. So India जिसके पास 18% of the world population है, so India की population is around 18% of world population and it only has 2.4% of the land area. So although India is at the 7th number in terms of territory, and the task for you is to tell me which is the largest country in terms of area. This country कौन सी है? India is the 7th largest country, which is the largest country in terms of area, mentioned in the chat box. Okay, so it has 2.4% of the Earth's surface area, but its fresh water resource is only 4%. So we have only 4% of the world fresh water resources. And apart from it, 4% water resources, only 2 or 3% is available. 1% is not even available because it is right now frozen in glaciers, or is it in groundwater, not accessible to us right now. ठीक है, so only 2 to 3% water resources ही हैं, and we have the burden of 18% of the world population. It means it becomes all the more important कि the immediate steps ले to tackle water stress. स्ट्रेस क्या होता है? जब भी आप टेंशन में होते हो, दैट इज स्ट्रेस. तो वाटर स्ट्रेस इज बेसिकली कि जो आपका रिचार्ज कैपेसिटी, जितना वाटर आपको रिक्वायर्ड है उतना आपके पास वाटर नहीं है, दैट इज वाटर स्ट्रेस. तो ऑल ऑफ दिस डेटा हैज बीन प्रोवाइडेड. ओके, देन they are talking about difference between adaptability and mitigation. दो कंसेप्ट इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करे हैं. यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इफ यू विल रीड वाटर फ्लोज टू द इकोनॉमी की हाउ वाटर इज एक्चुअली इम्पैक्ट्स द इकोनॉमी सेक्टर, हाउ इट इम्पैक्ट्स द एम्प्लॉयमेंट एक्सेट्रा, एग्रीकल्चर में कैसे इम्पैक्ट करता है, बाकी जगहों पे कैसे इम्पैक्ट करता है, ऑल ऑफ दिस हैज बीन एक्सप्लेन्ड हियर आल्सो. कैसे इसका इंपॉर्टेंस क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन एक्सेट्रा है. ठीक है, अब इसके बारे में एक दो कंसेप्ट अपन डिस्कस कर लेते हैं, टेक्निकल चीजें. सो क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए दो टाइप के रास्ते होते हैं. एक तो होता है अडेप्ट करना और एक होता है उनको मिटिगेट करना. तो अडेप्टेबिलिटी क्या होगा? फॉर एग्जांपल कि लेट्स से कि अब वाटर क्राइसिस स्टार्ट हो गया है, तो अडेप्टेबिलिटी वुड बी कि आप वाटर बजटिंग स्टार्ट कर दीजिए. ठीक है, आप वाटर सेविंग स्टार्ट कर दीजिए, दैट वुड बी अडेप्टेबिलिटी.
व्हाट वुड बी मिटिगेशन? सो फॉर एग्जांपल कि आप कावेरी रिवर के वाटर को डाइवर्ट करके आप डैम्स को क्रिएट करके तो प्रॉब्लम उसको मिटिगेट कर। तो यहां पे क्लाइमेट चेंज से डील करने के लिए दीज ऑथर्स आर सेइंग कि गवर्नमेंट मिटिगेशन लेवल पे तो बहुत वर्क कर रही है बट अडेप्टेबिलिटी नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल कि एज ऑफ नाउ कर्नाटका के अंदर, बेंगलुरु के अंदर वाटर स्ट्रेस से डील करने के लिए, वाटर क्राइसिस से डील करने के लिए द सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो सजेस्टेड कि कावेरी के पास आप मेके दातू करके एक डैम है उसको बिल्ड करने की परमिशन दे दी है, जो जो ड्रिंकिंग वाटर प्रॉब्लम है एटलीस्ट उसको रिजॉल्व कर पाएगा बेंगलुरु। So it would be kind of a mitigating type of step. However, there should be steps taken for adaptability also. For example, आपका फोकस होना चाहिए ऑन ग्राउंड वाटर रिचार्ज, कि आप कैसे ग्राउंड वाटर को बेटर रिचार्ज कर सकते हैं, कैसे आप रिवर वाटर को कैसे ज्यादा प्रॉपरली यूज कर सकते हैं, कैसे आप ऐसे क्रॉप्स को ग्रो करिए जो कम वाटर पिए। फॉर एग्जाम्पल आप राइस वीट की जगह आप कोर सीरियल्स पे पल्सेस की तरफ मूव करिए जो कम वाटर लेते हैं, विच मीन्स यूसेज ऑफ वाटर वो डिक्रीज, जिससे अपने आप ही वाटर बेटर अवेलेबल हो जाएगा। तो ऑल ऑफ दिस वुड कम इन अडेप्टेबिलिटी, सो विच मींस कि जो भी प्रेजेंट नेचर सिचुएशन प्रोवाइड कर रही है आप उसको अडेप्ट करने की ट्राई कर रहे हो, जो भी आपके पास रिसोर्सेज हैं आप उन्हीं की तरह अपने आप को ढालना स्टार्ट करो, अडेप्ट करना स्टार्ट करो। एंड मिटिगेशन इज यू आर ट्राइंग टू completely resolve the solution. So mitigation is also important, but at the same time you should also try to adapt to the current situation also. So all of this has been suggested. उसके अलावा हियर दे आर टॉकिंग अबाउट वॉट एवर गवर्नमेंट प्रोग्राम्स आर देयर। फॉर एग्जाम्पल हियर द नेशनल वाटर मिशन हैज बीन टॉक्ड अबाउट, हियर अमृत 2.0 अटल मिशन ऑफ रिजनरेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके अंदर आपके जो सेकेंड ईयर सिटीज हैं या रूरल रूरल अर्बन रीजन हैं, जहां पे जो रूरल एरिया जो अर्बन एरियाज में कन्वर्ट हो रहा है, उनके अंदर आप जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको प्रोवाइड करने की बात कर रहे हो। ऑल ऑफ दीज स्कीम्स हैव बीन टॉक्ड अबाउट एंड हाउ water accounting etc and their efficient use should be incorporated in this sector and how it has been incorporated is being talked about। इसके आगे now finally they are concluding here and they are providing you with certain suggestion। यहाँ पे उन्होंने सजेशन दिए फॉर एग्जाम्पल व्हाट शुड बी द बजटिंग, की किस टाइप से आपको बजटिंग करनी है अडेप्टेबिलिटी के लिए, कौन कौन से और मिटिगेशन स्टेप्स आप ले सकते हो जिनसे आप एक्चुअल में हेल्प कर सको। फॉर एग्जाम्पल हियर दे हैव प्रोवाइडेड यू विद माइक्रो इरिगेशन, कि आप एग्रीकल्चर के अंदर माइक्रो इरिगेशन, क्रॉप डाइवर्सिटी जो जस्ट मैंने आपको बताया उन सबको करिए। फॉर एग्जाम्पल डीसैलिनेशन प्लांट, आप डीसैलिनेशन प्लांट की टेक्नोलॉजी पे वर्क करो कि बेसिकली जो सी वाटर है, जो सैलिनाइज वाटर है, उसको भी आप यूज कर सको, तो एटलीस्ट जो कोस्टल एरियाज है वहां पे एटलीस्ट वाटर स्कैर्सिटी प्रॉब्लम्स। ओके एंड फाइनली दे हैव गिवन अ कंक्लूजन, और जहां पे उन्होंने एक पूरा किस तरीके से अपन एक क्लाइमेट रिजिलियंट इंडिया क्रिएट कर सकते हैं उसको कंक्लूड करके दिया। ओके सो इट वाज अ वेरी गुड आर्टिकल टू बी रेड एंड आई होप ऑल ऑफ यू रीड दिस आर्टिकल केयरफुली एंड प्रॉपर्ली। ओके सो मूविंग ऑन, now I have moved to the Indian Express, so we cover both the newspapers. So first news from Indian Express is basically one-liner kind of a news कि पेरू के अंदर there is a research center, international research center for potato। तो पोटैटो को अपन कैसे उसकी यील्ड इंक्रीज कर सकते हैं, उनकी क्वालिटी इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप यू नो कि पोटैटो का ग्लाइसेमिक इंडेक्स, तो ग्लाइकेमिक इंडेक्स इज हाई। व्हाट इज ग्लाइसेमिक इंडेक्स? सो ये फूड्स को जज करता है, फूड्स को मेजर करता है कि वो उनकी कैपेबिलिटी क्या है ब्लड शुगर को इंक्रीज करने के लिए। और अगर किसी का हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स होता है सो इट कैन एक्चुअली लीड टू द ज्यादा कंजम्पशन करने से, ज्यादा खाने से डायबिटीज भी कॉज हो सकती है। तो ये रिसर्च जो सेंटर है पेरू का, ये यील्ड या उसकी क्वांटिटी इंक्रीज करने की ट्राई कर सकता है। उसके अलावा ये ट्राई करता है कि कैसे उससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स को रिसर्च के थ्रू, उसके अंदर चेंजेस के थ्रू अपन रिड्यूस कर सकते हैं। तो अभी अभी इसका एक रीजनल सेंटर प्रपोज किया गया है इन एशिया, रीजनल सेंटर इन एशिया एंड टू बी स्पेसिफिक साउथ एशिया के अंदर, बिकॉज चाइना विच इज अ एशियन कंट्री वहां पे पहले से एक रीजनल सेंटर है। अब आपका साउथ एशिया के लिए भी एक सेंटर प्रपोज किया गया है एंड इट हैज बीन प्रपोज्ड इन इंडिया। एंड इंडिया के अंदर स्पेसिफिकली आगरा के अंदर ये सेंटर प्रपोज्ड है, तो प्रोबेबली आगरा के अंदर ये पोटैटो बेस्ड सेंटर वुड कम। ओके सो दिस वाज वन न्यूज फ्रॉम इंडियन एक्सप्रेस। Moving on, so one editorial which I have taken up from the Indian Express is check the sugar. So if you know, recently Nestle, which is a multinational company based in US, there were certain reports
wherein it was reported कि जो बेबी प्रोडक्ट्स होते हैं लाइक सीरियल्स एक्सेट्रा, सीरियल्स जो यूजुअली अपन प्रमोट करते हैं आजकल बेबी फूड्स के लिए, तो बेबी फूड प्रोडक्ट्स जो होते हैं उस लाइक सीरियल्स, उसके अंदर नेस्ले का जो शुगर कंटेंट है, शुगर कंटेंट था, इट वाज फाउंड हायर, वेरी हाई, इट वाज अबव द लिमिट व्हिच इज रिकमेंडेड। एंड बिकॉज ऑफ दिस, जो इंडिया के अंदर फूड सिक्योरिटी की ऑर्गेनाइजेशन है, रेगुलेटर है, FSAI। तो अनदर टास्क फॉर यू इज टू नेम, to tell me the full form of FSSAI. It's related to food security. Tell me the full name of FSSAI in the comment box. तो FSAI जो रेगुलेटर है फूड का, फूड सिक्योरिटी का, इसने भी इन्वेस्टिगेशन लॉन्च करी। तो नाउ दिस व्हाट दिस आर्टिकल इज सजेस्टिंग इज कि एक तो इनको आपको क्रिमिनली लायबल डिक्लेयर करना चाहिए। देयर शुड बी सम लीगल कॉन्सिक्वेंसेज अगेंस्ट सच काइंड ऑफ कंपनीज जो इस टाइप से लॉ, इसका लॉ का मिसयूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, व्हाट इट इज रिकमेंडेड इज, व्हाट इट इज आस्किंग इज कि, what it is telling you is कि usually कि why addition of sugar content, why higher sugar content is actually very bad for future health of a child also or a baby also. तो यूजुअली जो फूड इनटेक 2.5 months तक होता है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दी प्रॉपर फिजिकल एज वेल एज मेंटल ग्रोथ, फिजिकल एज वेल एज मेंटल ग्रोथ ऑफ द बेबी होता है। एंड इट इज रिकमेंडेड कि जो भी कैलोरी इनटेक हो, जो भी कैलोरी इनटेक हो, इट शुड नॉट बी वेस्टेड, इट शुड नॉट बी एम्प्टी कैलोरीज। तो यूजली कैलोरी सिर्फ एनर्जी प्रोवाइड करती है एंड उसके अलावा बॉडी के डेवलपमेंट में उनका कुछ नहीं होता है, बट एट द सेम टाइम प्रोटीन्स एक्सेट्रा इनका और भी काम होता है। तो शुगर एक्चुअली में सिर्फ कैलोरी देती है, प्रोवाइड एनर्जी प्रोवाइड करती है, उसके अलावा इसका कोई हेल्प नहीं होता, विच मीन्स इट लीड्स टू ओबेसिटी। तो अगर शुगर है, आप उसको सिर्फ आप कैलोरी ले रहे हो, और अगर आप कोई वर्कआउट नहीं कर रहे हो, आप उसको एनर्जी को यूटिलाइज नहीं कर रहे हो, तो वो एक्चुअली फैट के फॉर्म में डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देती है एंड इट वुड लीड टू चाइल्डहुड ओबेसिटी और टीनेज ओबेसिटी और फ्यूचर ओबेसिटी ऑल्सो। एंड इसकी वजह से लेटर ऑन हार्ट डिजीज एक्सेट्रा हो जाती है। विच मीन्स की जो गलती बचपन में हुई है, फॉर एग्जाम्पल द रॉन्ग इनटेक ऑफ फूड लाइक टेकिंग ऑफ मोर शुगर, इट्स एक्चुअली लीड्स टू ओबेसिटी एंड हार्ट डिजीज एट अ फ्यूचर स्टेज। That's why such kind of action, a proper action should be taken against such kind of companies also. And here the study is recommending why it is important that all of these, all whatever the calorie intake is taken by a child is taken proper care, या उसको proper ध्यान में रखकर उस सब चीजों को करा जाए। Okay, moving on. So this news was also there in the in the Hindu newspaper also, and it is also in the Indian Express newspaper, and it is also a very important topic in international relations. So remember this again, international relation is also important portion of your CLAT PK section. Like just like your one question is there on your environment or science and tech, either of them, there is always one question, yeah, one passage, actually 5 6 question from international relations section. Like last year it was from Israel, not from Israel Gaza. Last to last year it was Russia Ukraine, and this year it can be on Iran or on this Maldives also. So why this news is important is that this particular president, the present president, Mohammad Muizu, is a president, and in the presidential, in not in the presidential, in the parliamentary election, it has won a landslide. So out of the total 73 seats, it has won 60 seats. And you must be thinking why an election in a foreign country is important for India. The reason is that this Mohammad Muizu won the election, the presidential election, on an anti-India campaign. Anti-India campaign, and in other words, it was a pro-China campaign. So I hope you know Maldives is very near. It's in the Indian Ocean and it is very near to the Lakshadweep Islands also. Just when you cross the Lakshadweep Island, you actually enter the territory of Maldives.
and it is also a very famous terrorist, not terrorist, but tourist destination. And it was also in news because when Prime Minister Modi went to Lakshadweep, certain officials, certain ministers of Maldivian government actually made certain ill remarks, yeah, some tasteless remarks against the Prime Minister visit to Lakshadweep, and there was a comparison between Lakshadweep and etc. However, so because of this, there was a campaign also that people, the Indians who are going to Maldives should not go to Maldives and should visit Lakshadweep, etc. All of this was context. So because he was fighting on a anti-India campaign and a pro-China campaign, and there was a particular name also for that campaign known as India Out campaign. So a straightforward question would be, the India Out campaign relates to which of the following countries? So you should know it's related to Maldives. So since now he has also won the parliamentary election, this means now he has full control of the legislative body also. So president is the head of the executive and parliament is responsible for legislating. So since now he is the now he has control of the legislative body also, and he's the head of the executive body also, which means now whatever kind of policy decision he wants to make with regard to India and China, he can actually make. And it is problematic for India. Why? Because he is becoming pro-China, and China wants to increase its influence in Indian Ocean. And because Maldives is sitting at the center of Indian Ocean, it becomes a very strategic nature. And if China gets any kind of favors from Maldives, for example, it gets permission to establish a military base or a research base in Maldivian island nation, then China would have direct eye over India. That China would have direct control over the Indian Ocean sea routes also from there. So that's why India was trying to somehow get some favors in the Maldivian parliamentary election also. And that's why this news becomes important for you. So again, the facts which are given here, ki what was the voting percentage, how many seats he has won, those are not important. But at least you should know ki why this issue is important for you. Ki why this issue is important for India, who is the Maldives president, etc. All of these information becomes important for you. Okay? So that's why this has been. Next, so the Indian Express carries an explained section, and explained section of the Indian Express, I'll recommend everyone, even if you are reading the Hindu newspaper, if you can get a hand on the Indian Express explained section at least, you should try to do it because the coverage is very good. Okay. For example, in the explained section, there is one specific section regarding election, and here it is talking about the indelible ink. So right now, if you have voted, if you are above 18, so I know you know that the age for voting in India is 18 years. And अगर आप 18 से ऊपर के थे, तो I hope you voted in this election. So whenever you go to vote in an election in India, they put up a indelible ink on your index finger, on your thumb, or any of your fingers. आप किसी finger पे indelible ink होगी. Indelible ink means basically which cannot be diluted or which cannot be removed easily. So there is this news item is regarding what that ink is. Where is it produced? What is the history behind it? All of it is been covered. So although everything is mentioned here, let's discuss it. So one important thing which you should know is how it becomes indelible. So here it has been science and tech, maybe this type of question आ सकता है. What mineral or what component या chemical is there in the indelible ink? So you should know it is silver nitrate. It is the mineral, yeah, the chemical composition is silver nitrate, which is contained in this indelible ink. So it is also being provided here that the indelible ink usually does not fade away for the first 10 days. And it is only after 10 days that starts to fade away. And I hope you know what is the purpose of this indelible ink. So it is the purpose of this indelible ink that there is no fraud in the exam, there is no fraud in the election process. So once a person puts up his vote, once a person completes the voting procedure, this indelible ink is put on his index finger or one of the fingers, and it since it cannot be removed, a person cannot delete that ink or remove that ink and go for voting again. So that's why to stop such kind of frauds in election procedure, this indelible ink is being used. Now here you can also read it, key whatever what is the history of this indelible ink. So right now there is one particular company known as Mysore Paints, which is a Karnataka's company, Karnataka government's company, which has the sole authority or the sole contract
only company to have the contract to produce this. Okay, so all of this mentioned, you can also read this, you will be able to easily understand it, but it is advisable that you try to read all the portion, all the parts of the experience section, all of them are very good. Okay, so only this much is covered in today's newspaper. So these were the important parts. Rest of the topics which have not been covered are not covered today because they have been covered earlier also. Okay, so if you want, if you are not sure about a particular topic, so you can actually go through the previous recording and you will be able to find recordings or coverage of those topics. Okay, and the ClatPrep students can always come to us and ask us in detail how should we cover a certain topic. Okay, now moving on. So it is time to go through the 20 GK questions. So first question is regarding, so all of these questions are framed from the GK, from the Hindu and Indian Express newspaper only. And again, a reminder, it is advisable, it is requested of you that you should first go and try to solve it on the portal and then read the answers here. So, although we have discussed all of this now, so the context is that India's net direct collections grew 17.7%. Which of the following is not a type of direct tax? So now we know GST is an indirect tax, and rest three are actually direct taxes. Okay, we have already discussed all of these. Next question. There is a demand for a separate state of Gorkhaland for the Nepali-speaking Indians. Presently, Gorkhaland region forms part of the state, and the answer here is West Bengal. So the Darjeeling region has a large amount of Nepali speaking population, and basically the Gorkhas, which is also a regiment in the Indian Army. So people who were in Gorkhas earlier in the Indian Army regiment of Gorkhas or are currently serving, also their family members are actually living in the Darjeeling region, and it's a region in West Bengal. They want a separate state, not a separate country, but a separate state of Gorkhaland. Next, which of the following has recently changed its logo from ruby red to saffron, leading to political controversy? So recently, it is Doordarshan. It has changed its logo to saffron, and there has been political controversy because saffron is actually connected with the BJP party. So that's why the opposition parties are claiming that it is a step towards making Hindutva the ideology of the Indian state. Okay, moving on to the next question. Which of the following state has reported cases of mass birth deaths, a possible sign of spread of avian influenza? So we've already done that. It is Kerala. State of Kerala is reporting cases of avian influenza. Next, okay, in 2024, Mahavir Jayanti was celebrated on April 21. So yesterday was Mahavir Jayanti, which is the birth anniversary of last Tirthankar. So another, I always advise you to read the questions also because you will find relevant information, factual information in your questions also. Okay, so now you know the last Tirthankar of Jainism is actually Lord Mahavir. So my question is, how many Tirthankas are there in Jainism? And the last Tirthankar or the 24th Tirthankar is Lord Mahavir, which means there are 24 Tirthankars in the Jain philosophy. Moving on, which of the following country has made India its top tier security partner in its national defense strategy? So we have already done it. It is Australia. Moving on, Mpox is a type of pox virus which was in use after a rapidly expanding global outbreak in 22-23. Which viral infection or pox virus has been successfully eliminated worldwide, making it the only infectious disease to be eradicated from the planet? And the answer is C, smallpox. So smallpox as of now in wild or natural transfer of smallpox has ended. There can be one or two cases here and there because of infection spreading due to non-vaccination or some residue virus. However, in the natural case, the spread has eradicated totally. When is World Earth Day celebrated every year? So, because you know today is World Earth Day, we have already discussed. This is April 22. Next, recently IMF raised its forecast for growth. Where is the headquarter of IMF? And the answer is D, Washington DC. So World Bank, IMF, and all the World Bank institutions are actually in the Washington DC. Next, as per the Indian employment report, which sector employs around 45% of India's population and has the largest share in employment, and it is the agriculture sector which employs 45% of the population of India.
Next year, by which year does the government aim to provide tap water to all households under the Jal Jeevan Mission? So is it 24, 25, 26, or 2030? And actually it is 2024, by which all households in India should have a tap water connection. Next, where was India's first bullion exchange? The India International Bullion Exchange, launched on 29 July 2022. The answer is Gandhinagar. Also, although we haven't discussed it there because all of these are factual information also, all of these are from today's newspaper only. Okay. Which of the following Maldivian leader has secured a big win in the Maldives parliamentary election, giving control over the legislature to the president? So basically, I'm asking who is the present Maldivian president. So we have already discussed this is Mohammad Muizu. Next, the Supreme Court has recently allowed a 14-year-old girl to terminate her 30-week pregnancy. What is the time limit for abortion in India on advice of a single doctor? So on the first stage, when the pregnancy is not more than 20 weeks, the answer is B. When it is not more than 20 weeks, a single doctor can perform abortion. However, if it's crossed the limit of 20 weeks and is between 20 to 24 weeks, it is on the advice of two doctors. So all of this dealt in the Medical Termination of Pregnancy Act. So someday I'm going to take a separate class on MTP Act because it is coming in news regularly. Okay. So in the legal section, there can be a question on MTP Act. Next, where will India's Regional Center for Potato and Sweet Potato Research, affiliated with the Peru-based International Potato Center, be located? So from Indian Express, the answer is Agra. Next, which of the following food company is being investigated for additional amount of sugar in baby foods? So now we have already discussed it is Nestle. Next, which of the following country is not a party to the US brokered Abraham Accord? So again, if you will read Indian Express newspaper, it was covered today. And otherwise also we are going to discuss when we are going to discuss the Iran-Israel issue. So whenever a special cast is taken on Iran, Israel, or Gaza, etc., Israel-Palestine issue, etc., then we are going to discuss the Abraham Accord also. And here the country which is not part of Abraham Accord is Iran. The fourth country is Morocco, and it was an agreement to maintain peace in Middle East between these four countries, the Islamic countries, and the state of Israel. Moving on. So a patent is an exclusive right granted for a new invention offering exclusive ownership and protection to the inventor. For how many years is a patent protected under the India's Patent Act? So answer would be C, 20 years. So a patent is given a protection for 20 years. Innovation is protected for 20 years. Again, there was a editorial. There is an editorial on Patents Act in the Indian Express, and it is advisable if you read Indian Express that you read that article properly. So it's regarding some amendment. The heading is amendment something. Okay, so read that article. Next, what chemical is known to be present in the violet colored ink used during Indian elections? So we have already discussed it is silver mine. And finally, the last question: who has become the youngest challenger in the World Chess Championship after winning the FIDE Candidate 2024 Chess Tournament in Toronto, in Canada? And the answer is B. Bhutesh. Just at the age of 17 years, he has qualified for the World Chess Championship by winning the candidates tournament known as FIDA Candidates Tournament. So these are the 20 questions for today. That's it from my side. Thank you and have a very nice day. And I hope to see you in tomorrow's class with the new 20 GK question as well as the daily news analysis for the tomorrow news. Thank you and have a very nice day.